चलो, हाय करण। हाँ जी, मिस्टर अंशुल। यस मिस्टर करण, हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू? ऑल गुड, ऑल गुड। कैसी चल रही है ज़िंदगी? वेरी गुड जी। मोटरसाइकिलिंग कैसी चल रही है आपकी? बहुत बढ़िया। यार एक कल परसों ना एक सवाल आया मेरे पास। हमने इंट्रोड्यूस तो किया ही हाँ नहीं। अभी कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। अच्छा। एक सवाल आया कल परसों, नहीं मतलब ये इवेंचुअली आते रहते हैं हाँ, ये हाल आता रहता है। कि बाइक खरीदनी है भैया, क्या करें? On to you. This is Yeah. Anshul. Yeah. He is a captain Yes. in the I'm merchant sailing, navy. yeah. He's been sailing for I don't know how many years. 23 plus years. 23 years, and he's been biking also for 23 years, I Yeah. guess. And he has a lot of bikes. He has changed many bikes in those 20 years. Yes. He has a good collection. Right. So please tell us Yeah. about yourself. Hi. Yeah, I'm Anshul. I'm captain. I'm in merchant navy. So yeah, I've been traveling for so many years, and as soon as I got my first salary, I bought my first bike. I was just waiting for it, as if it was waiting to happen. Which one was it? It was that Charisma. Oh, that was a beautiful bike at that time. The initial One of the lot, most in 2000. powerful bikes. Yeah, that time, Yes, at that I time. remember when I was on the ship, and that time we didn't have that communication what we have nowadays. So we used to make a call once in a while, like once a month or something. Those satellite phones. Satellite phones, and even the local, whenever we used to reach port, we used to call up home. And then eventually all this email and everything came up. So that time I remember I made a quick call to my home. How is everyone? All okay? Okay, I'm planning to buy a bike. Go to the Hero showroom. Hero Honda, that time used to be Hero Honda. Yeah. And just look at this bike, because on ship I got a newspaper where I think Hrithik Roshan was the Roshan, brand yes. ambassador for it. I saw this bike. I said, okay, I want this bike in black color, as simple as that. I told my father, and I said, just have a look. Whatever you want to give booking amount, just give from my account. And then I remember when I went back, my father told me, I had like a lot of brochures on the table. So there was this, I think that time there used to be Passion, there used to be CD100, Boxer. Boxer was Bajaj, I think, and there was one or two more like 150 CBZ. CBZ. Hero CBZ Honda was a very good CBZ. bike. CBZ was CBZ a का good upgrade जो था Charisma. Yeah. So that time CBZ they were also selling. I mean, till 150cc. that time, yeah, that 150cc And one. Charisma was 235. 225, 225, 223 cc to be precise. That was the most powerful single cylinder bike at that time. Yeah, Indian manufacturer. Indian manufacturer. So I had all the brochures except that Charisma. Then my father told me, मैंने कहा वो जो मैंने बोली थी वो तो है नहीं ब्रोशर टेबल पे, कहाँ है वो? तो ही सेड कि वो तो हम ले ही नहीं रहे हैं। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा मेरे को तो वही लेनी है। तो सर नहीं उसकी सीट देखी ऐसे है, वो शोरूम वाले बोल रहे थे बड़ी तेज चलती है और तुम सारी लफंडरबाजी करोगे। हाँ, तुम लफंडरबाजी करोगे, तुम स्टंट करोगे। तो एजुकेशन उस वक्त हमारे मतलब अवेयरनेस नहीं थी कि क्या हमारे है को भी तो बाइकिंग। नहीं थी। हमारे को भी नहीं थी। तो हमने तो बस वही था कि अच्छी दिख रही है। और एक बचपन में याद है हम लोग जब छोटे थे, वी बोथ आर सिमिलर मॉडल, सिमिलर डेकेड मॉडल, मैन्युफैक्चरिंग सिमिलर। तो एक वो सीरियल आता था स्ट्रीट हॉक करके। ओके। उसमें वो ब्लैक कलर का सूट और ब्लैक कलर की करिश्मा लुकिंग, वो सुजुकी बैंडिट उसमें आती थी 1250 ब्लैक कलर की। तो तब से मेरे को वो फैंटेसी थी कि ब्लैक कलर की बाइक लेनी। आज भी है ये भी सिमिलर लुकिंग। So whichever bike I buy, I try to get it black color only if it is available. तो उसी से फैंटेसी जागी थी कि ये करिश्मा टाइप ही बाइक लेनी है मेरे को। तो फिर इवेंचुअली लड़ लुड़ के कैसे भी करके कन्विंस करके आई हैव अ वेरी गुड कन्विंसिंग पावर। तो माहौल बना के जिसको कहते हैं, अभी हमारे आगे पॉडकास्ट में आ गई माहौल कैसे बनाना। व्हेन यू वेंट फॉर अ टेस्ट ड्राइव आफ्टर 15 इयर्स, जब स्टार्ट किया और थ्रॉटल दे के चलाया, तो मुंह पे कैसी स्माइल आई थी एक बार जरा करके दिखाइए। यही आई थी। मैं I was giggling in my helmet the whole time. ये 3-4 किलोमीटर की That is what motorcycling does to you. I was like कि मतलब I was like अच्छा एक महीने बाद ये वाली बाइक मेरी हो something else. अब 2 साल हो गए थे, थोड़ा बजट 4 लाख से बढ़ के 7-8 लाख हो गया था। तो मैं कहा चलो अब कुछ अच्छा लेते हैं। Then I went to Triumph, वहाँ पे ट्राइड करी, ट्राइडेंट चलाई।
ट्राइडेंट दिखती छोटी है, पर but it is a very powerful very machine. triple, yeah, triple, you Triple cannot, cylinder, 660 compare, cc, you know. 82 horsepower Yeah. from 40 something horsepower on the 650 हाँ, Interceptor. तो डबल पावर हो गई. हाँ वो तो जितना मजा उसमें आता उससे डबल मजा आने लग गया. हाँ एंड देन इट वाज काइंड ऑफ इन द बजट आल्सो कि चलो 10 लाख के अंदर अंदर है, बट हो जाएगा. देयर एंड देन बुक करी, एक हफ्ते के अंदर डिलीवरी. मैं कहा चलो अब कोई जिंक्स नहीं हुआ, रॉयल एनफील्ड ही जाना. Did you ever feel when you bought it for first time? Did you ever feel that अभी थोड़ी जितने साल बाद चला रहा हूँ पावर थोड़ी सी ज़्यादा है? हाँ लगा At least था, for a लेकिन month or so, you know? इट वाज काइंड ऑफ मैनेजेबल बिकॉज उसकी पावर तो बहुत है, बट इट्स नॉट मैनिक, Yeah. मेंटल नहीं है वो. And did electronics help? हाँ, it has very good electronics यार. ABS है, traction control है. And I think the modes are also there. Modes are also there. So It did does you not have a lot of started with modes, just have two modes, हाँ, rain and road. Rain and road, yeah. But rain mode is 50 horsepower. Rain mode में कब तक चलाई? एक या दो बार रेन में ही. रेन में फर्स्ट डे से ही अच्छा, रोड अच्छा. पे चलाई. But you have the knack for like motorsports. हाँ मतलब you know, because so you I've been into motorsports, so my brain was able to comprehend the speed. Register the speed and you know, yeah. तो and थोड़े से मेंटल तो हुलिगन टाइप तो मैं हुई. जो शुरू में पूछा था कि मेरे से या आपसे भी हम लोगों से पीपल दे सी दे आस्क कि यार मेरे को भी एक बाइक लेनी है पहली, तो व्हाट डू यू से, कौन सी लेनी चाहिए? लेट्स से आई एम A newbie. अ न्यूबी. लेट्स स्टार्ट विद अ न्यूबी. फॉरगेट अबाउट कि हमने पहले कभी चलाई है. नहीं वो तो होना पड़ेगा ना, बिकॉज हम बाइक चलानी आनी चाहिए. हाँ बाइक चलानी आनी चाहिए. अज्यूम दैट वी नो हाउ टू राइड, कॉलेज में चला ली. अब हमने रियलाइज़ किया कि हमें एक बाइक चाहिए. बड़े हो गए बाइक लेनी. बड़े हो गए बाइक चाहिए. फॉरगेट अबाउट लेट्स रिमूव दैट कम्यूटर सेगमेंट कि हमें ऑफिस जाने आने के लिए चाहिए. लेट्स टॉक अबाउट कि हाँ अब मैं एंजॉय करनी है, मेरे को बाइक चलानी है. उसमें मैं कम्यूट भी करूँगा बिकॉज जब खड़ी होगी तो मेरा चलाने का भी मन करेगा. एंड कंसिडरिंग जैसे हमारा इंडिया का वेदर है, रोड कंडीशन है, इवन ट्रैफिक है ऑल ओवर इंडिया सेम. हम लोगों ने मतलब आई थिंक यू माइट हैव आल्सो टूर्ड, आई हैव टूर्ड ऑल ओवर इंडिया. कहीं पे द कंडीशंस आर नॉट एवरीवेयर द सिविक सेंस इज सेम, द ट्रैफिक कंडीशंस आर सेम. खाली वेदर पैटर्न, फूड एंड ये सब चेंज होता है, बाकी सब रेस्ट ऑल वी आर इंडियन. दिल है हिंदुस्तानी. इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक and that is why we are discussing it. It's difficult to suggest a bike to someone. ये सबकी अपनी lifestyle, preference, budget and riding style. Okay. Some people like street bike and there are lots of street bikes. Some people have कि भाई बचपन से सपना है सुपर बाइक लेनी है, वो fully fed ऐसे झुक के चलाएंगे, तो वो अलग सेगमेंट है. Do you suggest a beginner to buy a super bike? No. I know people. First bike is a V4. हाँ, पानी गाले. Is it? पैसा है तो प्रॉब्लम नहीं है. पैसा है, but is it really first of all, you know, नहीं, is मैं it वही बता रहा really हूँ. safe to ride? से फेयरिंग वाली भी तो छोटी बाइक्स आती है, 400 भी तो आती हाँ, है. मैं वही Ninja कह रहा 400 is also there. हाँ. 4RR is also there. Easier to manage and then some people like adventure. तो उसमें बिगिनर में there's KTM Adventure 390, small bikes also. तो if the person, सबसे पहले तो the person should be sensible, because at our age if we buy a bike and then what is the quantum of sensible, you know? Do Yeah, you think a 20-year-old will be sensible? I don't It think can so. be, A it may not 20-year-old be. should be. Do you think we are still sensible? I think we are. And touch wood, that's why we have not crashed. हाँ. But थोड़ा No, sensible होना पड़ेगा. We are matured, you know. Matured. But वो हमारे अंदर का बच्चा है अभी भी. तभी तो सुबह यहाँ पे आए. हाँ वही मतलब you know ठंड में. तो सबसे पहले तो कैटेगरी एंड सेगमेंट डिसाइड करना चाहिए कि आपको आपका कैटेगरी क्या है, सेगमेंट क्या है, आपका क्या इंटरेस्ट है. आपने इवॉल्व होना है फॉर ट्रैक राइडिंग, आपने इवॉल्व होना है फॉर ऑफ रोडिंग. मतलब व्हाट इज योर एंड गोल. अगर आपका मन है कि मुझे पूरा इंडिया घूमना है और जस्ट इवॉल्व टू अ सुपर बाइक, वही नहीं, अगर आपको प्लान है कि इंडिया घूमना है, टूरिंग करनी है, साउथ इंडिया जाना है, नॉर्थ इंडिया जाना है, उस साइड गुवाहाटी साइड घूमना है, बिकॉज दे आर ब्यूटीफुल प्लेसेस. अदरवाइज गाड़ी पे लोग नहीं जा पाते. इस कम्युनिटी में ये है कि आप ये सब कर सकते हो व्हेन यू फाइंड द राइट लाइक माइंड. तो अगर आपका वो है सेगमेंट, माइंड आपका वैसा चल रहा है, तो बेटर इज टू स्टार्ट विद समथिंग विच इज
लिटिल ऑफ रोड बायस्ड। अगर आपका मन है कि मुझे ट्रैक करना है, BIC पे जाना है या MMRT पे जाना, देन बेटर कि आप छोटी बाइक लो लेकिन उसी सेगमेंट की लो, सो दैट योर राइडिंग स्टाइल, योर ergonomics, योर यू प्रैक्टिस ऑन दैट काइंड ऑफ बाइक। और अगर आपको दोनों ही नहीं करने, यू वांट जस्ट कंफर्ट एंड स्पीड, देन यू बाय समथिंग लाइक अ स्ट्रीट बाइक, रोडस्टर काइंड ऑफ कैटेगरी। तो पहले तो वो डिसाइड करना है, उसके बाद यू हैव टू डिसाइड कि क्या बाइक लेनी है। दैट डिपेंड्स ऑन द बजट मेनली। एंड सेकंड, माय अंडरस्टैंडिंग इज यार, डू नॉट बाय अ वेरी पावरफुल बाइक एज योर फर्स्ट बाइक। इट शुड नॉट 100 हॉर्स पावर इज ऑल्सो वेरी वेरी फास्ट। मतलब मेरे हिसाब से तो इंटरसेप्टर फॉर 40 हॉर्स पावर, 44 हॉर्स पावर, इट्स ऑल्सो अ वेरी फास्ट बाइक। एंड आई थिंक फॉर रोड राइडिंग it is one of the best in bikes wrong to hands it is I mean, it is a missile. Okay, people would disagree, you cannot call it a missile here. No, for a newbie, मतलब when I rode it for the first time, I was amazed with the power. मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि रॉयल एनफील्ड इतनी पावर निकाल सकता। अब you have all kinds of bikes. You have a trail bike, as a X-Pulse 200cc, that is the best trail bike. You have a beautiful elephant, 1200. No, you cannot call it, it's a tiger, you know. Tiger is a tiger, you know. Tiger is a tiger, but it is an elephant in size. अभी मूव कर रहे थे तो पता लग रहा था। एलिफेंट नहीं, अभी भी गलत। टाइगर इज अ टाइगर, इट्स अ बीस्ट। Yes. So and then you have that BMW R1200, that is mix of street and sport. It's a sports tourer, which and you are planning to buy a street triple RS as well. I mean track specific bike. I would purpose. not exactly like, you know, I've not decided, but a track spec bike, you know. Either that or I think I recommended you a 6R. 6R, either of them. So middleweight category. So you also have experience of all these categories. So what is your I would say, you know, if you know about these other like developed countries or, you know, European and US countries, they have a you know, licensing categories. L1, L2, A1, A2, sorry. So I would say, let's say if you are starting or restarting motorcycling, there is a reason that those guys, because they have evolved and they have done studies or whatever, you know, they have these licensing categories. Because if I give, let's say I have a lot of money, I got 20 lakhs somewhere, my father gifted me, and I said no, it's my that poster dream to have that super bike जो हम सबका रहता था कि, you know, I want, आज भी है, so वो लेनी है जाके, and I should go and straight away buy a 1000 RR or a V4 or a V2 or whatever, like 150 horsepower plus bikes, you know. And I really don't know like what kind of skills and, you know, the what kind of how to handle those bikes. It's like, you know, I am walking on thin ice. I can, you know, drown anytime. So I would suggest to a beginner that start go easy. Well, I started, let's say my biking journey, how I started, it was unintentional, but it was like, I would say my parents would say कि हाँ चलो थोड़ा सा mature है, समझदार है. So when I started riding Karizma, it was 225. My second bike was a classic 500. Double. बिल्कुल double, लेकिन power is very different. Power is हाँ थोड़ी सी ही ज़्यादा थी, but yes, the torque and all, let's say the double the engine. जो available था उस वक्त, whatever was available, all this super biking and all these companies, they came much later. Then I bought a Harley Iron 883, which I converted to a 1200. You know, so you can see 225, 500, 900, 900. Then I went to the 1200 category. So my transition was smooth, and when I bought Harley, I thought it is a powerful bike. It is. After a few years of riding, I realized that, okay, now I gradually you upgrade. Na? I upgraded. First I know that now I have skills to handle the other bike. Okay, and then before buying my BMW, I test drove Ducati Multis and a GS and a lot of bikes, you know. And Ducatis, obviously, you know, they have like crazy amount of power. So I love that Multistrada, you know, when I test drove it. It's a beautiful But bike. then eventually I decided, like, you know, since I've been riding cruisers all along, I want a sports tourer. Now I want to graduate to a like sportier category.
Plus you want to see the world. plus touring, you know. So the sports tourer fitted the bill. Hmm. So there were only 2 or 3 sports tourers actually, if you see. I mean, with the fairing, with the wind protection. Tourer, I'll call it, with the wind protection. One was the Ninja. Ninja 1000, and this was RS, but it didn't sell much because it's a very underrated bike. So there were only Just few what, of 4 them. 5 of them in India. 2 or 3 were got in India. I think, yeah, that's in today's world in the superbike category. There's nothing such as bad bike. They're all good. They are all equally good for the purpose they are designed for. So coming to that question ki beginner bike wala, I would suggest, as you said, कि पहले तो पर्पस पता होना चाहिए कि करना क्या है, you know. Do I want to go to the track? ट्रैक से एक जोक याद आया. मैंने जब फर्स्ट टाइम ट्रैक पे रेस ट्रैक पे जा रहा था, BIC, you know, to learn and to do the L1 L2. So I was like going in August 21. फर्स्ट टाइम. उससे पहले मैंने ट्रैक पर राइड नहीं किया था. आई यूज्ड टू डू ऑफ रोडिंग लिटिल बिट हियर एंड देयर, कंसिडरिंग वट एवर टाइम आई हैड एट होम, यू नो. तो मैंने जब पेरेंट्स को बोला अच्छा मैंने ट्रैक पे जाना है, तो यूँ बोली 3 दिन तक मेरे घर में टेंशन का माहौल था. तो थर्ड डे आई आस्क्ड माय पेरेंट्स कि क्या हो गया, इतना क्यों टेंशन है. आई आस्क्ड माय वाइफ न्यू कि व्हाट इज़ ट्रैक, बट यू नो माय मदर वाज लाइक टोटली डीमोटिवेटेड, मोरल डाउन, टेंशन में कि ट्रैक पे जा रहा है बेटा. तो मैंने कहा क्या हो गया, क्यों इतने टेंशन में हो. तो उन्होंने बोला तू ट्रैक पे जा रहा है, ये सब क्या है, ये क्यों कर रहा है, ये ज़रूरी थोड़ा ना ये सब करना है. मैंने कहा ट्रैक से जैसा सेफ जगह तेज़ चलाने के लिए कोई है ही नहीं. मतलब अगर मेरे को तेज़ चलानी है तो मैं ट्रैक पे चलाऊँगा, बट बेटा ट्रैक तो बहुत डेंजरस होता है, कोई ट्रेन आ गई तो. मैंने कहा यू हैव टू कीप इन 2-3 थिंग्स इन माइंड कि भाई ट्रैक लिमिटेड है इंडिया में, लिमिटेड ट्रैक डेज होते हैं एज वी ऑल नो. तो एक्सपेंसिव भी है, बिकॉज इवन इफ़ यू हैव स्मॉल बाइक और बिग बाइक, ट्रैक के पैसे तो उतने ही लगने हैं. सो आई वुड सजेस्ट लाइक स्टार्ट विद अ डिसेंट 250cc, या आई वुड रादर से कि 30 bhp 30-40 bhp तक की कैटेगरी में स्टार्ट करो. I think अगर if you want to start and your budget is not very high, under 2 lakh rupees, I think approximately 2 lakh rupees, Duke 250 is a good bike. Anything around 250 is a good option. Like you know, anyone who is starting, let's say आपका टूर का इंटेंशन है, just go buy an adventure tourer. You can tour on any bike actually, but adventure tourer will be slightly more comfortable. 390 adventure. 390 adventure. I would say Himalayan. They're all decent and now they all have traction control. हाँ, so they all have good electronics nowadays. Traction control वगैरह है. So anywhere between, let's say, an X-Pulse category to a 390, you are good. You are okay as long as for some amount of time you drive them sensibly. You will get used to the power. Yeah. You will understand the maintenance of the bike. Yes. And then if you feel कि आपको और powerful चाहिए, then you can upgrade. And even if you have money, I'm saying even if you have, you're capable of spending big amount of money, start easy. Yeah. I know a lot of people who restarted biking, they went this route, you know, buy a smaller bike, middleweight, I would say कि below the middleweight category, and then eventually upgraded कि okay, now I can handle these big bikes. And trust me, you know, अभी हम लोग ये parking lot में इसको move कर रहे थे. They are heavy machines. Yeah, very heavy. It's not for beginners, you know. And then you will not enjoy, you will not use these bikes to full potential. Physical fitness is also important. Yeah. And अभी हम जैसे peak traffic में इसको चला के लाए हैं, so फिर आप enjoy नहीं करोगे, बोलोगे भारी है, मुड़ती नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. तो थोड़े skill acquire करो. And in between, I would also suggest कि join a riding school. चाहे off-road वाला करो या ट्रैक वाला करो. ट्रैक वाला एक्सपेंसिव होता है, डू ऑफ रोड वन, इट विल डेफिनेटली हेल्प इम्प्रूविंग योर स्किल्स, और यू विल एटलीस्ट नो कि व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू हैंडल द बाइक. हाँ, एंड द इंस्ट्रक्टर्स आल्सो टेल यू हाउ टू मैन्यूवर द बाइक. वो खड़ी वाली भी इन एनी कंडीशंस. हाँ, सो यू विल हैव द आइडिया, यू नो. और ऑफ रोड वाला दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव यार. आज ऑफ रोड वाला अंडर 10,000, उससे भी कम में हो जाता है. कोई अंडर 10,000 मतलब ठीक है. अगर आप आजकल कोई अच्छी बाइक 1.5-2 लाख से कम की है नहीं, यू नो. आप अगर 10,000 एक खर्च भी कर दोगे, डू इट आफ्टर 1 or 2 months, सेव सम मनी, बाय अ गुड राइडिंग गियर, डू द स्किल ट्रेनिंग, तो इट इज़ गुड एनफ. ओके, देन इवेंचुअली एज वी सेड कि आप अपग्रेड करो. किसी को अगर डायरेक्टली
सुपर बाइक कैटेगरी में घुसना है हाँ। एज देयर फर्स्ट बाइक, हाँ हाँ देन व्हाट इज द ऑप्शन? अभी ये दिस इज अ वेरी लाइक डिबेटेबल टॉपिक. सारे Few days debatable back है. I was at MMRT Chennai and we were discussing with pros कि अपने लिए मैं पूछ रहा था कि या व्हाट काइंड ऑफ बाइक शुड आई बाय ट्रैक के लिए, ट्रैक स्पेसिफिक. सो एंड majority of opinion was like, okay, since you have the experience you can go for 1000 RR V4 by a liter class. I said at this, after 20 years plus of riding, I still think that I don't have the skills to ride those bikes on track. Okay, and I'm doing track days like let's say twice or thrice a I year. took my Trident to the track. I remember हाँ. हम लोग मिले थे 22 में. I think you took your Trident. So I took the Trident to the track 23 में. So it was the most underpowered bike there. Yeah. लेकिन instead of that, I did not feel that I was riding that bike to its full potential. Yes. Yes, I felt कि it is underpowered on the straights. But otherwise, it is such a Corners powerful में. bike Yeah, for corners कि you do not have the skill set. Yes. Yes. उसकी सब कहते हैं brakes are not powerful, but they were amazingly powerful. Yeah. They were more powerful than I could have used them. Yeah. Yeah. And the power of the engine, only 80 horsepower, but it is powerful as Powerful. hell. Yeah. It can go 200 easily. Yes. ठीक है, straights पे other people were going 300. हाँ. I was going 200, but doesn't matter. Straight is a straight. हाँ. Main thing is Corners. Yeah. Of course, timing आपका उनके match नहीं हो सकता because of the speed and of course their skill set. But otherwise, for a beginner, even a 80 horsepower, 100 horsepower bike is more powerful More than enough, than yeah, more than enough. their body or their brain Yeah, can yeah. comprehend. If so, there is a, we still don't understand. There's a difference between experience and skill. A commuter or like us, you may commute for 20 plus years, but you may not have skill to ride on track or off road or emergency panic brake. तो Let's हाँ, conclude. yeah. काफी लंबा हो गया टॉपिक. हाँ. तो अगर छोटी बाइक लेनी है अंडर 2 लाख, अराउंड 2 lakhs, 2 lakhs, I'll 2 lakh, suggest 3 lakh. Go for Xpulse, V-Strom 250, Adventure 250, Duke 250, 390 ज़्यादा जाना. Interceptor. Hunter 350 if you are a commuter and or any like Royal Enfield within that power range, below 25 Now horsepower. Royal Enfields are very good. If you want to be like a track rider, buy a Duke 390, RC 390, all these R3, Ninja 400, 4R, ZX 4R if you have that kind of amount of money. And if you want to Even for that matter, in- Trident or Yeah. Street Triple Street थोड़ी सी Triple, expensive है, but yeah, हाँ. yeah. वो फिर मिडल वेट में और आ गई. Z900. हाँ, वो मिडल वेट कैटेगरी. लेट्स वो फिर इट्स दैट एंट्री लेवल ऑफ सुपर बाइक रेंज. तो इफ यू वांट टू बी अ ऑफ रोड गाय, touring and off-road, if more off-road oriented, buy again Himalayan 450. I can say like do anything bikes, go anywhere bikes, and Indian manufacturers, they are more, I would say I would be more comfortable on a Indian manufacturer bike in remote areas rather than a For that matter, Royal Enfield Yeah. or KTM, KTM. Yeah, they are serviceable parts are cheaper. everywhere. Yeah. You can use them to full potential. You can blow engines and make them up again Yeah. at a fraction of cost of blowing a clutch on these bikes. So you can go through that segment. Middleweight category, again, adventure touring. You have Tiger 900, BMW F900, Suzuki V-Strom DE, which is like almost 60-70% of cost of this Tiger and F900. So middleweight, you have lot of options depending on your budget, ranging from 10 lakhs to 18 lakhs. 18 lakhs plus, you have only handful of options, but again, many. But yeah, I mean, then that category we don't need to cater to because yeah. उस category में लोगों को पता है कि उनको क्या Yeah, by that time you will realize कि मेरे को exactly चाहिए क्या. हाँ. Yeah, whether you want multiple bikes, you want like how I did, I'm still looking for a track bike, after so many years. So because I have the touring setup, I have a sports touring which I'm doing like track and tour for now. So after doing this, I realized that no, I want now I'm
ready now to that's a good upgrade. yeah, now ready to buy a track spec, the purposeful bike, you know. So first of all, to summarize, you need a purpose. What is your purpose? Second thing is your budget. Third thing is approval from family. वो तो चलो, that is let's assume कि वो है. that is the first thing actually. हाँ. Okay, and obviously then you need to decide, you need to understand the cost involved post purchase, you know. Yes. How much you are willing to spend, what is your budget on spending It's not on like this, कि yeah. बाइक खरीद ली लेकिन चला नहीं सकते. चला नहीं सकते क्योंकि हाँ टायर महंगे We know a हैं lot या- of people who are doing that. कि बाइक तो है लेकिन Yeah. नहीं जाना yeah, क्योंकि if cost. you are using bike to its potential, there will be wear. Take it easy. You will eventually reach there. If you have a goal to have a better bike or a car for मतलब that the matter. main thing is do not think your first bike is your only bike. Yeah, That is first bike में ही आपको सब कुछ चाहिए. And another thing I would like, you have done motorsports, you know. You know how the cars. अरे in motorsports also. Yeah. When I went in, तो I used to drive a stock kind of a stock bike, a stock car. Car, yeah. धीरे धीरे when you start समझ you know, आया हाँ, आपको, you start winning, you understand the speed, हाँ, हाँ. then you start modifying. Let's say if I straight away give you a rally spec Porsche engine car, you know, will you be able to ride that? No. So go easy. अब बच्चा last भी है. rally we did in Dubai, I was driving the Nissan Petrol. अच्छा हाँ V8, पेट्रोल V8 400 yeah, yeah. horsepower engine. Imagine if I give you 1.6 जब आप चला रहे थे आपको V8 दे देता. वही है कि हाँ, तो- पहले चलना सीखो तभी तो भागना सीखोगे. Right. That is the main thing, you know. So decide what you want. Track पे जाना है तो buy a fared bike, middle category, and then sky is the limit. Again, चलो let's conclude. हाँ. Conclusion is कि basically you cannot advise anyone for which bike they should buy. no, we can advise. We have told you the No, we cannot the advise the outline. bike. हाँ, we cannot We can advise only the bike. give you a background हाँ. on what to look at before you buy a bike. Yes. And main thing is do not buy something that you cannot ride or you cannot Yeah. maintain. Yeah. और don't think कि पहली बाइक ही सब कुछ हाँ, आपको हाँ. सब सबका कुछ मिल इमोशन जाएगा. होता है पहली बाइक हाँ. पे और आपका इमोशनल कनेक्ट तभी होगा जब उसको पोटेंशियल पे यूज कर पाओ. तो इसलिए धीरे धीरे अगर आप अपग्रेड करो that will be a better option. बेटर ऑप्शन. Yes. It is a little expensive हाँ. route, हाँ. but that is the best route. Okay. So what is your next upgrade then? अब तो fully fed Fully fared. after this. Full Monty. Full